मत लीजिएगा, ठीक है, ओके। Are you able to see questions which is on this board? No, ma'am. Okay. हाँ. Tell me the answer of question 1. Ma'am, 1948. Okay. What is the answer of question number 4? मैम ये हुआ था 2014 में, लेकिन वो मनमोहन सिंह के राज में हुआ था मैम। डेट गिव मी द आंसर ओनली, प्रत्यय। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। January 2014. ओके, व्हिच वन आंसर इज? मैम डी मैम। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। Next question, I am just giving you question number 6. मैम पूरा आंसर। मैम नॉन ऑफ दीज होगा मैम। नीति आयोग का फुल फॉर्म नॉन ऑफ दीज होगा? यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. मैम आंसर भी तो है। Question number 19. What A is system capitalism? where government controls business, capitalism is an economic. यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो है, आई गेस ये थोड़ा रिपीटेड हो गया है, इसको रहने दीजिए। आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन 20 बता दीजिए मुझे। सॉरी मैम, क्वेश्चन 20। यस मैम, यस मैम। सॉरी मैम, वो अभिनव बार बार कॉल कर रहा था। क्वेश्चन 20। बी फास्ट प्रत्यय। वी डोंट हैव। मैम गवर्नमेंट हो जाएगा मैम। गवर्नमेंट, यस मैम। मैम गवर्नमेंट मैम, सॉरी। You can exit now. Thank you. I'm sharing the screen. So there are so many questions on the topic. The first question is, everyone, सब लोग आंसर दीजिएगा। Every student, I just want कि आप सब आंसर दीजिए इसका, ठीक है। So first question is, the planning commission was established in the year 1947, 1948, 1950 or 1965? 1950. The planning commission was established in which year? 1950. The first plan started on 1951. 1951. The first plan is started on in which year? 1951 में पहला प्लान स्टार्ट किया गया। और कितने साल तक चला पहला प्लान? 1951 to 1956. Every student, सब लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। Planning commission was scrapped. Planning commission was scrapped on which year? 2017. No. 2017. 1950. In which year? 2015, 14, 17, 14. 17. Actual में was basically scrapped in 2014. Yes, Formation of was announced in 15th August 2015, 15th August 2014, 26 January 2015 or 26 January 2014.
Tell me. 15 August 2014. 15 August 2014. It is not two. It is 2014. Yes, ma'am. 2014. Very good. Yes, ma'am. 2014 because 1st January 2015 में it was basically setups start हो गया था, ठीक है. In 1st January 2015 में it was start working. So it was basically कब हुआ था? It was in कब announce हुआ था? 2014 में. Which month? 15 August. 15th August. 15 August. ओके नेक्स्ट प्लीज म्यूट योरसेल्फ. अगर आंसर देना होगा तब अनम्यूट कीजिएगा आप लोग. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके नीति आयोग वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15th August 2015, 26th January 2015, 2nd October 2015, 1st January 2015. Answer is 1st January 2015. So नीति आयोग was established, right? Okay. Please mute yourself. सब लोग बच्चे म्यूट रखिएगा. जब आंसर देना होगा तो अनम्यूट होइएगा. Now the next question is full form of नीति आयोग is. full form क्या होगा नीति आयोग का? Transforming National Institution for Transforming India. National B होगा. Institution for Transforming India. India. This is B, the ma'am. For me. correct answer. Okay, please keep quiet. If I am saying please keep quiet, maintain some peace. The full form of Niti Aayog is National Institution for Transforming India. National Institution for Transforming India is the full form of Niti Aayog. Right? Now the next question is the main objective of the first 5-year plan of India was, listen carefully. B number, ma'am. Development of agriculture. Development of agriculture. Very good. Development of infrastructure, development of ports, development of the industries, and development of agriculture. The answer is development of agriculture. Clear हो गया सबको? Every student clear हो रहा है? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now the next question is the main aim of 11th 5-year plan was eradication of regional imbalances, food, work and productivity, inclusive growth in all sector, eradication of poverty. D होगा, Ma'am, ma'am. C, ma'am. होगा inclusive growth. Inclusive growth in all sectors. Very good. The answer is inclusive growth in all sectors. But eradication of poverty was also one of the part of this, right? Okay. Every student, next point. The period of the annual plan. Let me explain the annual plan. जो 1 साल का गैप कुछ प्लान्स के बीच में लिया गया था, that is annual plans. ठीक है? So the period of the annual plan is from 1964 to 66, 67 to 69, 66 to 67, 68 to 69. 62 से 65 to 66 to 68, 60 to 64, 67 to 68. C, ma'am. 62 to 65, 66 to 68. No. Which one is 1967 to 1969. 1960? Which one is the annual plan is from? कौन से साल में हुआ था annual plan? Ma'am, 1967 to 1969. मैम 1990 से 1992 था एनुअल प्लान. Yes, ma'am. Ma'am, 1990. 2-3 जगह था annual plan. बचपन में गए थे. और 1978 Okay. So what is the question is which of the following type of economy has purely private ownership? Okay, जितने भी बच्चों ने hand raise किया है वो लोग सब आंसर बताएंगे. अनीशा? Yes, ma'am. Capitalistic economy. Capitalist economy. Okay. Next student. Yes. Capitalist economy, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, capitalistic economy.
Okay, so the answer of this is capitalist economy. Why the answer is capitalist economy? Because in that there is a only private ownership. वही उसी में से purely private ownership होता है. अगर हम socialist economy का example लें तो government owned property की बात हो रही है यहाँ पर. Mixed economy यानी plus socialist plus capitalist, right? So the answer of the purely private ownership is capitalist economy, which determine who determine prices in the capitalist economy? Who determine capitalist economy? Who determine prices in a capitalist economy? कौन determine करता है capitalist economy में prices को? Yes, Mahi. Ma'am, market forces. Anisha, Yes, ma'am. Market forces. Alok, Same, ma'am. Market forces. Gaurav, Yes, ma'am. Market forces. Shubhan. Yes, ma'am. Market forces. Exactly. The answer of this is market forces, because government determines jahan price karta hai, that is a socialist economy. Big corporates are there, but they don't have right that they can determine the price, but they will work according to the market force. And what is the market force? Demand and supply, right? That is the market force through which there is a capitalist economy, which is helpful for determining the prices. Now the next question is, capitalist economic system is the feature of which of these countries? USA, China, Russia, India. Raise your hand. Yes, Alok. USA, ma'am. USA. Okay, Gaurav, Yes, ma'am. US. Mahi, Ma'am, USA होगा. Anku, हम यूएसए होगा. Shubhan, Yes, ma'am. USA. Sagar. Yes, ma'am. USA. Exactly. Why the capitalist economic system is there in the USA only? USA जहां पर सबसे ज्यादा private ownership है. Second thing, China में socialist economy में है, Russia में socialist economy है, India में mixed economy है. So the USA is the country where there is a capitalist economic system. Now the next question is, which of the following is guiding force of the capitalist economy? Social service, private property, competition, profit motive. Question 13, what is the answer? Every student, please mute yourself. Yes, Anku. मैम प्राइवेट प्रॉपर्टी. Mahi, Ma'am, profit motive. Anisha, And profit motive. Alok, Ma'am, competition. Ritik, Profit motive, ma'am. Shubhan, Profit motive, ma'am. Abhinav, Social service. Ritik. Okay, so the answer of this is profit motive. What is the guiding force of the capitalist economy? Please understand the question what they are asking. They are asking about that what can force the country to be in the capitalist economy. There is that is a profit motive, because in the capitalist economy the profit is basically controlled by the individual. जैसे मान लो मेरी वहां पर कंपनी है तो प्रॉफिट मुझे मिल रहा है, सिर्फ मुझे फायदा हो रहा है. सो द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो सबसे ज्यादा इसीलिए रन कर रहा है बिकॉज ऑफ गेटिंग द प्रॉफिट, राइट? सो द प्रॉफिट मोटिव इज वन ऑफ द रीजन फॉर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही तो प्रॉफिट मोटिव हो रहा है ना. प्रॉफिट हम अर्न भी किससे कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनी से, राइट? सो यहाँ पर गाइडिंग फोर्स में आएगा आपका प्रॉफिट मोटिव, राइट? सोशल सर्विस विल नॉट बी द आंसर, प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी द आंसर, बट इट इज नॉट. Competition and profit motive is the answer. Now the next question is, in which type of economy is government interference is limited? Government interference किसमें limited होता है? Yes, Mahi? Market economy. प्रत्यय, मार्केट इकोनॉमी में. ऋतिक, Market economy, ma'am. अभिनव, None of the above, ma'am. होगा लगता है capitalist economy. roll number 65. Mixed economy, ma'am. Okay, anyone else who is left with the answer? Shubhan. None of the above. Market economy होगा. The answer of this is market economy. In which type of economies the government interference is limited? The answer will be
market economy. Market economy, here what they want to say, that is a capitalist economy, and the capitalist economy is that economy in which the government intervention is very less. Yes, they are making the policies, but the interference is very less, very limited, right? Okay, now the next question is the classification of sectors in an economy into public and private sector is on basis of which of the following? The classification of sectors in an economy into the public and private sector is on the basis of which of the following? On the basis of activity, on the basis of work condition, on the basis of ownership, none of the above. Raise your hand. Okay. Yes, Ritik? Ritik, what will be the answer? Next, Shubhan, what is the answer? On the basis of ownership. Sagar? On the basis of activity, ma'am. Mahi? Ma'am, on the basis of ownership. Anku? Ma'am, on the basis of ownership. Okay, so I guess every student is done with this. So let me tell you the answer of this is on the basis of ownership. So अगर हम सेक्टर की बात करें इकोनॉमी में, तो पब्लिक और प्राइवेट कंपनी क्या शो करता है? ओनरशिप तो करता है कि लिमिटेड लग गया है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका प्राइवेट पब्लिक कंपनी हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट का भी जिसमें रोल होता है। प्राइवेट में पीवीटी लिमिटेड लग गया, तो ओनरशिप किसका हो गया? इंडिविजुअल का। सो सेक्टर जो इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बनाया गया है, वो बनाया गया है ओनरशिप के बेसिस पे, एक्टिविटी के बेसिस पे, वर्क कंडीशन के बेसिस पर नहीं, आपके ओनरशिप के बेसिस पर कि कंपनी को कौन ओन कर रहा है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following activities comes under the tertiary sector? Please raise your hand. Please raise your hand. Okay, before giving the answer of this, let me explain the types of sectors. There are 3 types of sector. First one is, yes, Akrish, you want to say the answer? Communication and banking. Very good. So the answer of this is communication and banking. गौरव आप थोड़ा लेट हो गए, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 तरीके का सेक्टर जो है वो किसी भी इकोनॉमी में है। हमारे इंडिया में भी 3 सेक्टर है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड वन इज सेकेंडरी, थर्ड वन इज टेरिशरी। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, जो सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को या सारे रॉ मटेरियल्स को कैरी करते हैं, ठीक है। सेकेंड में आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, सारे इंडस्ट्रीज आपके सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टेरिशरी सेक्टर का मतलब होता है सर्विस सेक्टर, विच इज फॉर सपोर्टिंग, किसको सपोर्ट करता है टेरिशरी सेक्टर? आपके मैन्युफैक्चरिंग को और एग्रीकल्चरल सेक्टर को, दैट इज सपोर्टिंग। सो ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज आर कम्स अंडर द टेरिशरी सेक्टर। सो यहाँ पर अगर हम सर्विस देखेंगे तो व्हाट इज द सर्विस? कम्युनिकेशन एंड बैंकिंग इज सर्विस, राइट? सो आपका बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टीचिंग, एजुकेशन, एवरीथिंग कम्स अंडर द सेकेंडरी, टेरिशरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। क्लियर हो गया? और इंडिया में अभी लगभग 60% से ज्यादा टेरिशरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। चलिए, आई गेस आप लोग को क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, एवरीवन? यस मैम। ओके, which of the following is our correct statement regarding the organized sector? अच्छा, organized sector से related question है, please see it very carefully. They are controlled by the government. The employment terms are fixed. It provides low wages. The sector is registered with the government. What will be the answer? Raise your hand. Alok, yes, Alok. Yes, ma'am. First number, they are controlled by the government. Second, Gaurav. Ma'am, the sector is registered with the government. Subhan. Yes ma'am, ये number होगा मैम, they are controlled by the government. Okay, Anku. 1 होगा। Abhinav. मैम सेकंड होगा, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर। Sagar. 4, ma'am. Ritik. Pratyay. The employment term are fixed. Second. Yes, ma'am. Second होगा, ma'am. Let me give you the answer of this.
See, what is the difference between organized and unorganized sector? Organized sector are those sector in which there is rules and regulations are made for the employees. ठीक है, employees के लिए जहाँ rules regulation बना होता है, गवर्नमेंट जहां पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जैसे कि ईपीएफओ सिस्टम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी है, प्राइवेट में भी है. सो इसका जो आंसर होगा, लेट मी टेल यू, इसका जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से रिलेटेड जो आंसर होगा, दैट विल बी आंसर 1 एंड आंसर 4. ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और हर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपके गवर्नमेंट के पॉलिसीज को फॉलो किया जाता है. साथ में ये जो भी सेक्टर होगा दैट इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. लाइक अगर हम प्राइवेट कंपनी भी बनाते हैं तो हम कंपनीज एक्ट के अंडर में उसको रजिस्टर कराते हैं, है ना. सो इन शॉर्ट द आंसर ऑफ दिस इज 1 and 4. ठीक है, दोनों ही आंसर इसके होंगे. एक और चीज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वैसे सेक्टर हैं जिसका ना ही रजिस्ट्रेशन है और उनके एम्प्लॉइज को के लिए हम कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं. जैसे आप कभी आसपास अपनी ग्रोसरी स्टोर में जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि जो वहां पर पर्सन है जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, हेल्प जो कर रहा है बॉय या जो भी वहां पर हेल्पर है, उसका जो जॉब है दैट इज ऑन द डेली बेसिस, डेली वेजेस के बेसिस पर होता है ना ही उसमें कोई सैलरी फिक्स होता है. उन जितनी दिन छुट्टी लेंगे उतना उनका पैसा डिडक्ट होगा, ना ही लीव के लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, है ना. तो दैट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमेशा कंट्रोल होगा गवर्नमेंट के द्वारा और रजिस्टर्ड होगा गवर्नमेंट के द्वारा. सेकंड भी तो होगा, एम्प्लॉयमेंट का टर्म जो फिक्स रहता है. The employment terms are fixed, but that can be vary. The answer of this can be 1, 2 can be the answer, but जहां तक मैं आपको बता रही हूँ, the answer will be 1 and 4. Okay, next question. In which sector government owns most of the assets, provide all the services? Yes, Pratyay. पब्लिक सेक्टर हो जाएगा. अभिनव. पब्लिक सेक्टर में. ऋतिक. पब्लिक सेक्टर मैम. शुभान. पब्लिक सेक्टर में. गौरव. पब्लिक सेक्टर. माही. मैम पब्लिक सेक्टर. सागर. पब्लिक सेक्टर में. आलोक. Public sector, ma'am. Exactly. The answer of this is public sector. Okay, I am just leaving this question. I am just going toward question number 20. Please see it very carefully. Question number 20 is saying dash gets to make economic decision under capitalism. Answer is individuals, government, literally no one, the president. Raise your hand. Yes, Ritik. Yes, Anku. No, individuals. Shubhan. इंडिविजुअल मैम. Mahi. मैम individuals. Yes, the answer of this is individual, because in economic decision, if we are talking in the capitalism, that is totally based on the private property and the profit motive. So the decisions are taken by individual, not government, and there is someone who is taking decisions. So literally no one is not the answer. Even president is also not the answer. Okay, now the next question is industrial policy of 1948 aimed at industrialization, growth of agriculture, development of infrastructure, development of service sector. Raise your hand. Okay, what will be the answer, Anku? Anku? Alok? Growth of agriculture. Pratyay? हम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा मैम. Abhinav? इंडस्ट्रियलाइजेशन ए में. Okay, Ritik? ए मैम. Mahi? मैम industrialization. Very good. So the industrial policy of 1948 aimed at, no doubt they are working in other sector as well, but their main focus was on industrialization. That is one of the reason there are so many licensing system and so many things was introduced, right? Now the next, and they want to increase more and more industries in India. Okay, next question is, in which of the following basic categories can business environment be divided? Business environment को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? First one is local and regional, second one is regional and national, third one is internal and external, last one is financial and non-financial. Raise your hand. Yes, Anku. I'm internal and external. Shubhan. Yes, ma'am, internal or external. Very good. So basically the business environment, what is it?
बिजनेस एनवायरमेंट आर द फोर्सेस, ये क्या है बिजनेस एनवायरमेंट? ये फोर्सेस हैं जो कंसिस्ट करते हैं वैसे फैक्टर्स को जिसका इफेक्ट आपके बिजनेस पे होता है पॉजिटिवली एज वेल एज निगेटिवली। एंड दिस इज द सिस्टम, ये एक बिजनेस एनवायरमेंट एक ऐसा सिस्टम है जो आपको डायनेमिक अप्रोच को यूज करने के लिए फोर्स करता है। डायनेमिक अप्रोच मतलब क्या है? जैसा बदलाव आएगा वैसे ही बिजनेस को चेंज करेंगे या फिर नया चीज ऐड ऑन करेंगे या मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपका इंटरनल और एक्सटर्नल दो एनवायरनमेंट है। अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल? इंटरनल प्राइवेट बिजनेस के लिए होता है, वो इंटरनल वो कंट्रोल करता है केवल प्राइवेट वाला, जबकि एक्सटर्नल गवर्नमेंट कंट्रोल करता है एक्सटर्नल जो भी। ओके, गुड, वेरी गुड। इंटरनल एनवायरनमेंट वैसे एनवायरनमेंट है दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द बेसिकली बिजनेस कंपनीज, एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर पेस्टल। पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। These are those factors which is not controllable by the business, ठीक है? That is beyond the control of the business. Internal में क्या आएगा आपका? कस्टमर्स आ सकता है। कंपटीशन इज somehow इंटरनल में भी दो पार्ट में ये डिवाइडेड है, ठीक है। माइक्रो में है, इट इज डिवाइडेड अंडर द टू पार्ट्स, सम आर द माइक्रो एंड सम आर द एक्सट्रीम इंटरनल। तो कुछ ऐसे फैक्टर जैसे सप्लायर, कॉम्पिटिटर, कस्टमर्स, ये भी हैं जिनको कई हद तक हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट कंपैरेटिवली टू पेस्टल वी कैन कंट्रोल देम, ठीक है। सो कंट्रोलेबल फैक्टर्स इंटरनल में, नॉन कंट्रोलेबल या अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स दैट विल बी इन एक्सटर्नल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is a statement which derives the role that organization plays in a society. Yes, Abhinav? mission मैम। अंकु? मिशन मैम। माही? Mission, ma'am. ऋतिक? Mission, ma'am. आलोक? मिशन मैम। शुभान? Yes, ma'am, mission. Okay, very good. I just want to tell everyone, please participate in MCQs. सारे बच्चे participate कीजिए MCQs में। ये सिर्फ 10-15 बच्चे के लिए नहीं है, this is for every student. Please participate in MCQs. Okay, next question is, economic environment refers to all forces which have to be political, natural, economic and social. Raise your hand. Economic environment refers to all forces which have a political, natural, economic and social. Okay, yes Anku? मैम इकोनॉमिक। Mahi? Ma'am, social. Gaurav? Yes, ma'am. So, Shubhan? Ma'am, political होगा member. Alok? सोशल मैम। The answer of this is economic. Economic environment में economic ही तो होगा. Why you all said social? Economic environment में economy होगा. आपका capitalist economy, socialist economy, economic planning, industrialization, all these things comes under the economic environment. जैसे कभी आपका मशीनरी, राइट? Abhinav, please don't speak without raising your hand. ठीक है? So what I am saying right now, that in economic environment, all the forces which is comes under the economy, which is affecting the economy, that will be the answer. Why we are taking the political, economic and social? The answer will be economic only. Okay, dash environment is with the control of the business, within the control of the business. Yes, internal, external, micro and macro. What will be the answer? Yes, Pratyay? प्रत्यय? अंकु? सर मैम पिछले वाले का इंटरनल होगा। शुभान? Yes, ma'am, internal. आकृष? ma'am, internal. अभिनव? सागर? नहीं पता। Internal, ma'am. Okay, so the answer of this will be internal. So internal environment is within the control of the business. ठीक है? Now the next question is, ये question just opposite है, that dash environment is beyond the control of the business. In internal, external, micro and macro. I guess Shubhan, you can tell me. External.
Okay, Sagar. External, ma'am. Okay, next question. Macro environment is also macro environment is, अच्छा एक और question रह गया, please देखिएगा. Micro environment is also called as general environment, operating environment, economics environment, political environment. Yes, Ritik. Economic environment, ma'am. C. The micro environment is known as operating environment. That is operating environment. Okay. Macro environment is also called as general environment, operating environment, economic environment, political environment. Yes, Anku? Political environment. Very good. Okay. Now the next macro environment is known as general environment. The answer is not political environment. Macro environment is known as general environment. Micro environment is known as operating environment. Always remember this. Now the next question is, the environment which is close to business and affects its capacity to work is known as dash environment. Internal environment, external, micro and macro. Tell me. Yes, Shubhan. Internal, ma'am. Yes, very good. Factors that create opportunities and threats to business unit is known as internal environment, external environment, micro and macro environment. Yes, Sagar. External, ma'am. Very good. Okay, let's leave these some questions. Let's move toward the another question. That is question number 33. Please see it very carefully. Study of human population is called as dash environment: political, social, demographic, economic. Yes, Gaurav. Ma'am, demographic. Demographic. Very good. Which is one not included in national culture? Language, internet, belief, attitude. Yes, Anku? Internet. I guess everyone knows that it is not a national culture, internet, right? It is a technology. Culture spreads from one place to another, and such transmission is called as difference, reputation, adoption, heritage. Yes, Gaurav? D, ma'am, heritage. The answer of this will be difference. The answer of this will be difference. ठीक है, अलग दो कल्चर में अलग अलग है, तभी तो वो एक दूसरे का कल्चर अडॉप्ट कर सकते हैं, तभी तो वो ले सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज, इसको ट्रांसमिशन को कहेंगे डिफरेंस. अगर यहाँ पर अडॉप्शन की बात होती तब अडॉप्शन हो सकता था, मतलब कि लेने की बात. विल स्टार्ट फॉलोइंग सम कल्चर, देन दैट इज अ काइंड ऑफ अडॉप्शन, राइट? Next one is, which of the following is the best explanation of political environment in international business? First one is, the political system of each foreign market that serves to profit only its own country. The economic system of each foreign market that serves to profit only its own country. Government activities in international market that serve to hinder the conduct of business of another country. A set of factors relating to government activities and political factors that serve to either facilitate the hinder the conduct business in foreign country. What will be the answer of this? Everyone, you all are able to see? Yes, Abhinav? Foreign country. D. D. A set of factors. Yes. D. Anku? Ma'am, C. Government. The answer will be D. Set of factors relating to government activities and political factors. ठीक है, या तो वो फॉरेन के कंट्री में एक्टिविटीज को हिंडर करेगा, या तो वो सर्व करेगा, फैसिलिटेट करेगा. ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज, पॉलिटिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी कंट्री में बेनिफिट भी दे सकते हैं, थ्रेट भी है, वो अपॉर्चुनिटीज भी है, और आपके लिए वही रिस्क भी है एक तरीके से. ठीक है, जितना ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी उतना ज्यादा आपका प्रॉब्लम कंट्री में. ठीक है, सो द आंसर विल बी लास्ट. ओके, व्हेन अ होटल रेस्टोरेंट बिजनेस इज एनालाइजिंग इट्स एनवायरनमेंट, it would classify a change in the law on the smoking in public places as an dash factor: economic, social, political, technological. Yes, Akrish? Social. Very good. So the answer of this will be social. When a hotel restaurant, अगर कोई भी रेस्टोरेंट पे आसपास
अगर हम इस नो स्मोकिंग एरियाज बना रहे हैं, सो दिस इज फॉर द सोशल एनवायरमेंट. इट इज अ एथिकल जॉब ऑफ एवरी कंपनी टू वर्क टुवर्ड द सोसाइटी. ठीक है. सो अगर कोई रेस्टोरेंट बिजनेस भी है, सो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आसपास के एनवायरमेंट को क्या रखें, प्योर रखें, दूसरे लोगों के लिए सुटेबल रखें. तो आंसर विल बी सोशल. ठीक है. सोसाइटी से रिलेटेड सोशल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consumer Protection Act is significant to immovable goods, movable goods, particular goods and services, all goods and services. What will be the answer of this? Yes, Alok? Ma'am, all goods and services. Very good. So the answer of the Consumer Protection Act is all goods and services. See, I am just giving some students priority because I guess so many students already give so many answers, right? So don't worry, it is not for because I just want to complete it little bit fastly. That's why I'm doing. कोई भी doubt होगा तो you can ask, right? Okay. How many rights does a consumer have under the Consumer Protection Act? Yes, Mahi? Ma'am, 6. Very good. Alok? Yes, ma'am, 6. Yes, the answer of this will be 6. Consumer Protection Act के अंडर में आपके 6 rights हैं and 3 additional rights हैं. तो answer of this will be 6. Okay. Next question. Under the Consumer Protection Act, please mute yourself. Please mute yourself. Under the Consumer Protection Act, the rights of the consumer do not include to be safety, choose, presented, informed. Raise your hand. Yes, Shubhan. C number, ma'am. Very good. So the answer will be right to presented. Informed है ही, choose है ही और safety है ही. The answer will be presented. Okay, next question is, when the seller manipulates the price, it is known as caveat emptor, unfair trade practice, restricted trade practice, none of the above. Yes, Ritik. Restricted trade practice, ma'am. Anyone else? Caveat emptor. A, ma'am. UTP, ma'am. ये होगा Unfair trade Yes, practice. ma'am. ये होगा मैम. The seller manipulates the price, then the answer will be restricted trade practices. This is not caveat emptor or unfair trade practice, but the answer will be restricted trade practices when the sellers are manipulating or basically changing the prices. The answer will be restricted trade practices. Okay. Now the next question is, under this act, the minimum age of the forum member of the district forum should be 30, 40, 35, 65. Yes, Ritik? 35, ma'am. Very good. The answer of this minimum age of forum member, district forum में जो भी members होंगे, कितने member होंगे district forum में? How many members? 3, ma'am. 35. 3, ma'am. How many members? I'm not saying about the, I'm not asking for the answer. I'm saying how many members. The answer will be 3. 3 members में एक तो 3 president members. and open हो जाए. एक minute. And one Why should you be all are repeating? Why you all are repeating? आंसर दे दिया 3. अब शांत हो जाइए प्लीज. पहली चीज कि 3 में से एक प्रेसिडेंट है और 2 मेंबर हैं, जिसमें से एक फीमेल का होना बहुत जरूरी है. सो यहाँ पर जो फोरम मेंबर्स की बात हो रही है, द आंसर विल बी 35. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैक्सिमम एज फॉर अ स्टेट कमीशन मेंबर शुड बी 60, 35, 70, 67. Anyone? Raise your hand. Yes, Anku? 67. The answer will be 67. Okay. Next question is the maximum age. The maximum age National Commission members should be 60, 35, 70, 65. Raise your hand. Yes, Abhinav. 20, ma'am. 70. The answer will be 70. Which of the following forum can reappoint the same person as its member? Raise your hand. National Commission, State Commission, District Commission, none of the above. Yes, Anku. Ma'am, National Commission. No. The answer is of this is none of the above. No one is going to reappoint the same person as its member. In which forum it is compulsory to have female member? National Commission, State Commission, District Commission, all of the above. Raise your hand. Yes, Ritik. Anku.
What will be the answer of this? Have any doubt? Last वाला कौन सा?